माननीय विधायक श्री रणेंद्र प्रताप स्वाई नहीं अन्याय बोली कहला से ऑनरेबल स्पीकर मैडम the honorable chief minister and who happens to be the finance minister has explained the circumstances which has necessitated immediate legislation by an ordinance. Now the item para 3 जो गुड़िक मेंशन है more than 30 odd items 36 सेगुड़ी को आमर फर्स्ट स्पीकर ex finance minister has disputed, has told that enough time should have been given. Actually time dabara thila, but I do not know whether constitutional provision of 45 days is expiring on that. Aji jodi expire korthubo, then we have no other way out, but we have to stick to this. Now the main objective of GST, madam, one nation, one tax. But the way it is being implemented now in this state and the country, one nation, many taxes. विभिन्न धारा रे विभिन्न बातरे तमे कार्यक्रम चलैछ. So if the government cannot do a one nation, one tax, I wonder how it is talking about one nation, one election and other things about which this seems to be little far-fetched. GST was aimed at bringing down the tax burden on the people, common लोकों upare. तारो दिशा दर्शन थेला सेया. However, the way more and more items are pushed into higher tax brackets, and the way the government is taxing basic items like milk, छोटो छुआ को मिल्क दौचो ना, मुड़ी आदिवासी भाई माने खाउछथि सुंदरगढ़ रे, ता ऊपर टिकस हैला मना करियो हो नै 8 रे दही तम गारे पनीर सेटा भी जीएसटी का ता ऊपर सब टैक्स कला किए बापा एगुड़ा को ऊपर तमरो दायित्वटा कौन मुख्यमंत्री एपागे थिला बेले एक कथा उठाउथले बर्तमान सेपागे बसिक कौन कहे आम टे शुणा शुणा तेणु चूड़ा मुढ़ी दही पनीर मिल्क एगुड़िक ऊपर जो टैक्स बसई सेटा तुम असली चेहरा देखा प्रतिफलन तेणु कथा छल उठी कौन ना ऑयल बॉन्ड टा कौन है आर द स्टेट्स टू बी ब्लेम्ड आमर जो भैट आ अन्य जिनस उठेगा विषय भाई कहले no states lost indirect tax rights. Karna states cannot be blamed. Karana the states lost indirect tax rights when they accepted the GST in 2017 मसीह कृष्ण भाई and compare the central government. States collected 19.9 lakh crores against the central government 31.6 lakh crores. यही अवधि भितर 15 to 23 भितर. Did the previous UPA government put the oil bond burden? Yes. Yes. But no, because the new government paid little, very little outstanding oil bond. Budget documents show the outstanding oil bond in financial year 2014 was 1.34 lakh crores. A year before the new government came,
by financial year 2022, the outstanding was 1.21 lakh crores, which meant it had paid only rupees 13,500 crores, that is 0.5%, while collecting 27.3 lakh crore in oil taxes during this period. एते टंका तमे कलेक्शन कल सेटा कौन आम पाखु आसला पेट्रोल डीजेल दर कमिला तमे कौन कही तुम कोट करी हाई ऑयल टैक्स इज ए डायरेक्ट बर्डन ऑन द पुअर केमिति A government-sponsored survey in 2014 showed 61.4% of the petrol is consumed by two-wheelers in our country. 13% diesel is consumed by agriculture, I'm a chassis. 70% of the diesel, that is 99.6% of the petrol are consumed by transport sector. The first one shows high tax on fuel is a direct burden on the poor, who use two-wheelers, and the other two raises the cost of travel by bus and train, food and other essentials. High fuel tax, when crude price has fallen but not passed on to the consumers. The crude prices fell in 2023, and the cheap Russian oil brought windfall gains to the oil marketing companies. Not only feeds inflation, it cuts down households' disposable incomes. ये है चित्र मैडम तो ऑयल कथा उठिला बोली मैं कहली तो कही न था तो मन रखा उचित जे आमर दुई जो कर्मी माने जो माने स्कूटर मोटरसाइकेल चलाउछथि से 103 ऊपर चलाउछथि किंतु एठी बैरेल 100 रु कमी किना को जगह पहुंचलानी बर्तन आसीबी high GST collections. Ordinary people are burdened by high GST too, as an indirect tax. The impact of the rich and the poor is equal. आपण गोटे सार्ट किणवे आपण को घरे थिबा चाकर पिला पाई मध्ये गोटे सार्ट किणवे कि सी जदि किणव एका टिकस सी दब तमे दब rich and the poor equal, but no ability to pay. The government takes particular pride in high GST collection, a rise in 116% between financial year 2018 and financial year budget estimates 2024. And yet in July 22, the government imposed 5% GST on food items consumed by the poor, जो विषय में कहली दही खाऊ चूड़ा खाऊ सकालू आम दही खाऊ ना नहीं गरीब लोक मुढ़ी खाऊ ना नहीं ता ऊपर 22 मसीह दिगला जहाँ को आम अपोज कर निवेदन करी मुख्यमंत्री जिते जीवे जीएसटी काउंसिल को अटेंड करने ये कथाटा ओडिशावासी तरफ उठे ओडिशार 26% people belong to Adivasi and others. नहीं, if I have missed it, मुझे जानी ची तमें सकता कोई वो, तमें कहीं न कहीं ले तमें जता opposition वस्तुले सकता उठे ही थला, जो कथा से कोई तेरे कोई दो था परो को बुद्धि दिस में घर को महालिंगे भाई अब तमें ये तो उठे ही थला, सही थी भाई तमें जा कोई थला, तो वाक्य तू ही रक्षा करे सौदागर तेणु मु निवेदन करी जो कथा मोर भाई कहले भॉइस रेस करिवार नहीं भॉइस रेस करिवार अच्छी इन दैट मीटिंग जेतेबेले when GST on luxury items had been cut down from 28% to 12 to 18% bracket को आसीथला Sitaraman said it was approved by all states. कौन गला से पिला पड़ेगा सेठू सेठी पड़े जाइए स्टेट गवर्नमेंट माने जते अपोज करेंगे
सेतेबेले मैडम सीतारमण कहले नहीं दिस इज अप्रूव्ड इन द जीएसटी काउंसिल किंतु केरल गवर्नमेंट ये जो 28% रो टिकसटा इंपोज करा जाइथला ताकू स्टेट रे लगे देले दे टोल्ड दैट लग्जरी आइटम जोटा बड़ बढ़िया मान ताकू आम लगे दबू तुम भारत सारा लोक मुझे इच्छा करी आम मुख्यमंत्री तक पॉलिटिकल विल देखेबे जो 5% टिकस आम मुढ़ी उपर पड़ी चूड़ा उपर पनीर उपर पड़ी ताकू आगामी जीएसटी काउंसिल मीटिंग रे अपोज करेंगे।